The second group will be presenting the role of minimally invasive surgery in rectal carcinoma. And the presenters are Sakshi Rajput, who will be presenting the anatomy, risk factors, pathophysiology, and the clinical features. Second speaker is Sahib Nabi, who will be presenting the investigation and the staging, followed by the third speaker, Muhammad Salim, who will be presenting the treatment. सुन मेरी बात अच्छा कॉपी का प्रेजेंटेशन उससे डिवाइस पे copy it onto this and then run it from that place. Copy on the presentation. फोल्डर लेना पड़ेगा कर सीधे इस पे स्क्रीन पे कर Pet surgeons must have an eagle eyes, lion's heart, and lady's hand. Now, a very welcome good afternoon to respect. People of that one. No, what's Mostly in advanced cases, and second one, weight loss that is associated with excision of gist, where the surgeon is hitching the anterior gastric wall with the anterior abdominal wall. This is the intragastric view showing the lesion at the gastroesophageal junction. The surgeon has started excision using harmonic scalpel and the excision is complete. Now the surgeon is closing the defect in the posterior wall. Time is over. This time we are in the surgical seminar hall, and as is the past precedence, today is the second elective competition for our students who had come to us for these elective postings. The idea of these elective postings is that we introduce the students to newer technology, newer techniques, newer surgical procedures at a very young age. Once we do that, that encourages them to choose a path of their liking. They understand what is the disease that they would like to treat. They understand what would be the treatment part of the disease, and they understand that once these patients are treated properly, how beautifully they can be sent back home at the quickest. This is what the idea is, and I must thank my administration, especially my principal, Professor Ifat, who stood by us and who said, no, this is a wonderful initiative and it should be done. We are trying to encourage them, we are trying to catch them young so that they take up the path. We want the best possible students to come to surgery so that they learn what we have gathered over a long period of time, and they will certainly benefit from that. And I want to thank everybody, every student. They have done a wonderful job. You can see the presentations, they were really of world class, and we are going to make sure that they go on to the right path. Thank you very much. Program in the future also, because that is how we are going to improve the conditions of the surgical department or for the patients as well as for the students. So there's a number of students who want to be doctor in future, but due to some failures in previous exams, वो suicide की तरफ जाते हैं, depression की तरफ जाते हैं. क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? I think this is not the end of the world if you don't come to the medical. अगर आप मेडिकल कॉलेज नहीं आते हैं तो आपको ये समझना है कि ये जिंदगी का खात्मा नहीं है. नहीं, जो बाकी जो प्रोफेशंस है, जो बाकी शोबे हैं जिंदगी के, उनमें भी हम एक्सेलेंस ला सकते हैं. और मेरी गुजारिश है अपने यंग जो बडिंग डॉक्टर्स है या जो बाकी स्टूडेंट्स है, प्लीज, सुसाइड एक बहुत बुरी चीज है, एक हराम चीज है. इसकी तरफ आपको सोचना भी नहीं है. आपको यही सोचना, चलो अगर मैं मेडिकल कॉलेज नहीं गया तो बस जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है. तो बाकी प्रोफेशंस है तो उनमें आगे जाइए, उनमें एक्सेल कर लीजिए.
हम तो यही चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हो, और कामयाबी बहुत तरफ से आ सकती है। सिर्फ डॉक्टर बनना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर बन गया, नहीं, मैंने भी मेहनत की है और मैं चाहता हूं सारे मेहनत करें, लेकिन सीट्स जितनी है उतने ही डॉक्टर बन सकते हैं। सो हमें हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए, तो उससे हमें ये जो एक नाकामयाबी हो जाती है ये हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। और ये बहुत गलत बात है कि हम नाकामयाब होके फिर इस गलत रास्ते पे चले जाते हैं। साक्षी राजपूत है, मैं 4th MBBS स्टूडेंट हूँ, MBBS GMC श्रीनगर में। और आज हमारा सर्जरी कंपटीशन है, और जो डिफरेंट केसेस पे है, लाइक मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी पे, ठीक, सब डिफरेंट केसेस पे है। और आज मेरा जो केस है इंडिविजुअल और एक्टिव CA केस है, और यहाँ पे हम सारे डिफरेंट बच्चे आए हैं अलग अलग अपने केसेस के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइक एक्सपोजर मिल रहा है हर एक बच्चों को कि हम आगे आके हम कुछ परफॉर्म कर सके, काइंड ऑफ लाइक मेरे जैसे बच्चे जिन्होंने कभी स्टेज पे कभी आए ही नहीं, और एक स्टेज फोबिया जो होता है हर एक बच्चे को, कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम आगे आएगा देन उसको एक जो फोबिया जो गेट रेड होगा, लाइक ओवरकम कर पाएगा, उससे हेजिटेशन जो है वो, लैक ऑफ जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम कर पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत एक अच्छा वो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपने कोई भी बच्चा जो है वो मेरे जैसा बच्चा, लाइक अगर मैं निकल सकती हूँ तो देन यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि मैं तो अलग ही लेवल की थी, लाइक देयर इज नो लेवल फॉर मी। Rishabh Pamecha, second year postgraduate student in the Department of General and Minimal Access Surgery in Government Medical College Srinagar. I am in my second year of residency, and I recently went to Cleveland, Ohio in the United States of America to make a podium presentation for our video, which was a combined laparoscopic thoracoscopic repair of an idiopathic incarcerated diaphragmatic hernia. This case was performed by Professor Iqbal Salim sir, the head of the department, and it was presented at the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons annual meeting in Cleveland, Ohio 2024 from the 17th to the 20th of April. All the eminent endoscopic and gastrointestinal surgeons from across the world were present at the meeting, and I was very honored and with the opportunity to represent the institution, represent Kashmir Valley, and represent India at this stage.